सब्सक्राइब कीजिए पीए के देश रिएक्शन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए रिएक्शन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पीए के देश रिएक्शन चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट अनीस। एक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो के साथ आप तमाम दोस्तों की खिदमत में एक बार दोबारा मैं हाजिर हुआ हूं। और दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो होने वाली है। बल्कि मैं आपको इस वीडियो का टाइटल बताता हूं कि एक हालांकि इंडिया तो जो है ना हर किस्म के सुपर पावर बन गया है और बन भी रहा है, और मज़ीद अपने आप को जो है ना वो सुधार ऐसे ऐसे सिस्टम अपने आप के अंदर कर रहा है कि वो जो है ना वर्ल्ड का सुपर पावर बनने की जो है ना कोशिश में है। तो लेकिन उसी टॉपिक के ऊपर जो सुपर पावर की वीडियो है, ये उसी तरह की वीडियो है। ये भाई ने जिन भाई ने ये बनाई है, ये कोई इंग्लिश में जो है ना इन्होंने स्पीच की है। तो लेकिन इंडिया के ऊपर जो है ना इन्होंने ये वीडियो बनाई है कि कैन इंडिया बिकम अ स्मार्टफोन सुपर पावर, क्या इंडिया स्मार्टफोन सुपर पावर बन सकता है। तो आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर यही कुछ देखने वाले हैं कि क्या इंडिया स्मार्टफोन सुपर पावर बन सकता है या नहीं। अब देखते हैं ये भाई इस वीडियो के अंदर क्या बताते हैं, क्या दिखाते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड था इस वीडियो को सिलेक्ट करके। मैंने कहा जो है ना आप तमाम दोस्तों के साथ बैठकर इसको कम्प्लीटली देखूंगा। तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर भाई जो है ना क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं और क्या बताते हैं। ये क्या वो अपनी वीडियो के अंदर ये वाकई कर सकते हैं कि जो है ना बता सकते हैं कि ये वाकई इंडिया सुपर पावर। यार इतनी पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि भाई ने ये किसके लिए बनाई है। तो जाहिर बात है यार, ये इतनी सारी पब्लिक जो है ना जो स्मार्टफोन यूज़ कर रही है, दुनिया का नंबर 1 चैनल जो है ना नंबर 1 पे भी हो चला जाता है, कभी नंबर 2 पे भी चला जाता है, वो इंडिया से ही है टी सीरीज़। तो ये स्मार्टफोन्स की वजह से ही है ना, जितनी पॉपुलेशन इतनी जो है ना यूज़ कर रही है स्मार्टफोन्स, तो ज़ाहिर बात है सुपर पावर भी है इंडिया ऑलरेडी है। लेकिन ये वीडियो है, वीडियो इन्फॉर्मेशन वीडियो, इसके अंदर देखते हैं हम ये भाई हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं इस वीडियो के अंदर। तो इसी वजह से मैंने इस वीडियो को सिलेक्ट किया। मैंने कहा जो है ना देखते हैं इस वीडियो के अंदर भाई क्या क्या बताते हैं इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों आ जाते हैं डायरेक्टली वीडियो के ऊपर। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके साथ इस बेल के ऑप्शन को लाजमी दबाइएगा। लेट्स स्टार्ट। Thanks to CuriosityStream for sponsoring this video. If you're a phone geek like me, you must have noticed it already. India gets many of the coolest phones these days. Just to name a few, Xiaomi and Oppo have both built brands for India with Poco and Realme, and Samsung made their super aggressively priced M series phones here. And not only do these India-first offerings put the devices we in the West have to shame in terms of price-performance ratios, increasingly they're also made in India. Made in India. So the 48th episode of the Story Behind series, let's explore why the Indian smartphone industry has become so competitive, and if the company can take this smartphone boom to the next level and become a true smartphone superpower. बड़ी ये इस तरह की वीडियोस जो बनाकर बंदा ये प्रूफ कर सकता है कि वाकई इंडिया किस हद तक सुपर पावर बन चुका है। और पब्लिक का भी जो है ना रिएक्शन और कमेंट्स जब आते हैं तो दिल को तसल्ली मिलती है, वाकई भी जो है ना इंडिया के अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं। Actually already had a brief moment with homegrown smartphone brands a few years ago. Back in 2014, over 2/3 of the phones in the country were sold by Indian brands like Micromax, Carbon, Intex and Lava. And that same year, Micromax actually managed to outsell Samsung for the first time ever and briefly became the largest mobile brand in India. ये ब्रांड इंडिया में तैयार होते हैं। Didn't last very long though, as just a year later Samsung reclaimed the throne and Chinese brands like Xiaomi, Oppo and Vivo started entering the market. Turns out the Indian brands didn't really stand a chance against this new onslaught, as their whole strategy was just to buy ready-made phones from second and third tier manufacturers in China, stick their logos on them and sell them to consumers in India. Of course, that didn't hold up against brands like Xiaomi and Oppo, who had large R&D facilities, extensive control over their own hardware, as well as deep pockets for their successful operations in China. According to this fantastic article by Gadgets 360, when Chinese brands like Oppo entered the market, they initially paid up to $110 per customer acquisition, compared to the $3.2 some local brands were paying at the time. That is an insane 30x increase in marketing spending, even if it was a temporary one.
In a similar vein, Xiaomi didn't spend much on marketing, but had no trouble losing money on phones for years in India to build up its brand and drive competitors out of the market. None of the more simple Indian companies could keep up with either of those, so it is no wonder that by now they have lost ground and only Micromax occasionally makes it into the top 5. But in their frenzy to outspend and outcompete each other, these foreign companies quickly realized that in order to win in India, they needed to invest more and more locally. Samsung, Oppo, Xiaomi, and Huawei now all have local R&D facilities in India, even if they're somewhat small, and all major brands now assemble the majority of their phones sold in India domestically. In fact, Samsung has recently opened the largest mobile manufacturing plant in the world by output in India, and Foxconn, the world's largest electronics manufacturer, has opened up multiple factories here, including ones for Xiaomi and even for Apple to assemble some high-end iPhones. These phones, while assembled in India, still use components that are mostly imported, but that's a major step forward nonetheless. So, in a sense, things have kind of come full circle. Instead of Indian companies selling phones made in China, though, now it is Chinese and Korean companies selling phones made, to some extent, developed in India. It's still far away from India having its own Samsung or its own Xiaomi, but it is a significant revival of the industry. So let's take a look at why this revival is happening. It starts with macroeconomic factors. India has over time become the second largest smartphone market in the world, and it is the only large one that is growing significantly. All other major regions are suffering declines, so India has become crucially important as a market. At the same time, China, the original factory of the world, is losing its attractiveness as a manufacturing hub, with manufacturing wages having tripled over the last decade or so, environmental and labor rules getting stricter, taxes rising, and the US-China trade war in full swing. Companies are more eager than ever to move their factories out of the country. India, together with Vietnam and other Southeast Asian countries, are logical destinations, and indeed, India has recently toppled China to become the largest recipient of foreign direct investment in the world. Seeing the increasing attractiveness of India as both a market and a manufacturing hub, the Indian government has implemented the so-called Make in India strategy. Make in India covers many industries, not just phones, but in this video we'll just focus on the parts that impact phones. Under the plan, the government simplified taxation and labor regulations, it encouraged infrastructure development, and it made it significantly easier for foreign companies to invest into India. It has introduced the so-called phased manufacturing program, which is a step-by-step plan to incentivize phone makers to bring their manufacturing to India. Step 1 of the program is to first slap import tariffs on finished phones coming into the country, but let components come in mostly untaxed. This is supposed to encourage phone brands to assemble their phones in India from imported components first, and it seems to have worked very effectively. India has recently become the second largest phone manufacturer in the world after only China. There are now well over 200 manufacturing plants across the country, up from just 2 a few years ago, and the ratio of imported devices dropped from 78% to below 18%. Step 2 in the program is slowly implementing import duties on components one by one to also encourage the domestic manufacturing of these individual components, not just the assembly of them. As you can see, the government plans to start with simpler components like chargers and batteries, and is planning to add increasingly complex components like microphones, printed circuit boards, camera modules, and touchscreens over time. Progress with this step has been made too, but it's slower than expected. According to Counterpoint Research, India still imported $13 billion worth of components in 2018, which accounted for 80% of the value of the phones made in India. And domestic components manufacturing is lagging behind the planned output significantly. While the first 2 stages have seen some success, the third and current stage, which is the most important one as it accounts for 62% of the value of these devices, has seen very little success so far, meaning that the more complex components are still mostly imported. The first PCB manufacturing plants in India are already being set up by companies like Vivo, but things are taking longer than expected. Either way, despite being slightly behind schedule, I think the direction is pretty clear. India went from being a completely import-driven phone economy to having a reasonably large manufacturing sector, and there are no signs of a slowdown.
In fact, the government has set the goal of manufacturing 500 million phones in 2019, of which it wants to actually export 120 million. Now, I think that's a little optimistic given that we're pretty deep into 2019 and we haven't seen a lot of exporting activity yet, or at least I couldn't find it, but it is an impressive state nonetheless. Now, the last question is how this smartphone boom will impact Indian companies, because having foreign companies manufacture Made in India is of course better than nothing, but can't on the long term be a sustainable strategy. I personally think that big homegrown success stories will take a significant amount of time to develop, and I also feel like India might be a little too late to build its own major smartphone brand. This market feels very mature, extremely competitive, and extremely oversaturated already. But there are other areas that we could see promising Indian companies in. In fact, I think the first crop of them have already arrived. Reliance Jio, a gigantic Indian conglomerate, has wiped the floor with competitors in the smart feature phone business, with its homegrown Jio phone line selling tens of millions of units out of nowhere. And while these aren't advanced smartphones per se, they are hugely important for the Indian market. Similarly, Signal Chip is the first Indian company to bring microchips to the market. They are currently focusing on 4G and 5G modems and microchips for base stations, which are the units that beam radio waves for mobile networks around. And it is still unclear just how good their chips really are, but the fact that an Indian company was able to design and bring something as complex as semiconductors to the market at all is a massive step forward for the country. And as foreign companies bring more and more knowledge and capital into the country, as infrastructure and supply chains get better, I see no reason why similar success stories wouldn't become more common in the future. Success breeds success, and I'm really positive about the outlook of Indian tech companies. One last way I'd like you to think about the rise of Indian tech companies is through this model of technology transfer that I just made up. Let's take a look. Typically, the more complex the technology gets, the more profitable it becomes to make it. Countries and companies typically work their way up this ladder, chasing each other over time. And what we're seeing is India entering at the bottom, taking away some of the low-end assembly work and simple component manufacturing from China. China is moving इंडिया देखो कैसे वो उन कंट्रीज की तरफ बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है. Orignel, for example, squeezing companies like HTC, Sony, and LG out of the commodity smartphone business. Korean, Japanese, and Taiwanese companies are also trying to move up the ladder, focusing more and more on high-end semiconductors, memory chips, camera sensors, and so on. Of course, all of this is kind of an oversimplification, but I think it illustrates quite well how countries and companies have to move up this value chain quickly enough to offset the losses that they see at the bottom end. And it'll be really interesting to see how quickly India can take over parts of China's old business model when China is trying to encroach on those of the others. And talking of encroaching, I've recently spent a ton of time on CuriosityStream, binge-watching documentaries like this one, which explains how the first picture of a black hole was taken and how black holes work in general, which is something that every geek should know. You can watch it or any one of CuriosityStream's over 2,400 documentaries and non-fiction titles for free for 31 days using my links in the description. CuriosityStream features original content from Stephen Hawking, Jane Goodall, David Attenborough, and many more. It was founded by the founder of the Discovery Channel and works on essentially every device ever, including computers, phones, and smart TVs. It only costs $2.99 if you decide to pay for premium after the free trial month. So if you're ready to binge some high-quality documentaries, then go to curiositystream.com/TechAvatar and use the promo code TechAvatar to get 31 days of free premium access to CuriosityStream and to support my channel as well. बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो थी दोस्तों, और मुझे लगता है इस वीडियो को देखकर आपको भी पता चल गया होगा कि किस तरह जो है ना इंडिया अपने आप को जैसे सुपर पावर है, लेकिन अपने आप को मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी सुपर पावर बनाने में कितनी जद्दोजहद कर रहा है, कितनी कोशिशें कर रहा है, और वो उसी हिसाब से ग्रो भी कर रहा है. ठीक है ना. आपने ये जो है ना ये जिनकी वीडियो मैंने सेलेक्ट की थी उनकी वीडियो के अंदर आपने वो ग्राफ भी देखा कि जो है ना वो इंडिया बिल्कुल कैसे ग्रो करता जा रहा है, जिस स्पीड से जा रहा है. हकीकत में ये मोबाइल स्मार्टफोन्स की जो है ना मामले में भी जो है ना इंशाल्लाह सुपर पावर बनेगा, जिस हिसाब से ये अपनी जो है ना अपने अंदर निखार पैदा कर रहा है इंडिया हर मामले में, हर मामलात में. ठीक है ना.
तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये वीडियो थी, इन्फॉर्मेशन इसके अंदर छुपी हुई थी। इस वीडियो के अंदर मैंने कहा जो इन्फॉर्मेशनल वीडियो है ये आप तमाम दोस्तों के सामने भी रखनी चाहिए और इसके ऊपर हमारा रिएक्शन भी आना चाहिए। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये वीडियो थी। स्मार्टफोन के मामले में इंडिया बहुत जल्द ही आपको सुपर पावर, स्मार्टफोन के मामले में भी सुपर पावर दिखाई देगा। जिस हिसाब से मैं इंडिया को देख रहा हूँ, जिस हिसाब से इंडिया के अंदर काफ़ी सारी तब्दीलियाँ हो रही हैं, ग्रो कर रहा है, जिस हिसाब से इंडिया हर मामले में जो है ना ग्रो कर रहा है, तो बिल्कुल ये इस मामले में भी जो है ना इंडिया अपने आप को पीछे नहीं रखेगा, क्योंकि इंडिया की कोशिश है कि वो अपने आप को सबसे आगे रखे और सबसे आगे रखने की कोशिश करे, ठीक है ना। तो उस कोशिश के साथ जब पब्लिक जुड़ जाती है ना, तो फिर वो उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो जैसे आपकी पब्लिक आपके वो जो है ना जुड़ी हुई है आपके जो है ना कंट्री को, वो हर वैसे ज़ाहिर बात है कि हर कंट्री की कोशिश होती है, हर कंट्री के पीपल्स की, लोगों की कोशिश होती है कि अपने आप को सबसे आगे रखें, सबसे आगे रखने की कोशिश करते हैं। वो चाहे क्रिकेट मैचेस हों, चाहे स्मार्टफोन्स हो, चाहे सुपर पावर, चाहे कुछ भी आप जो है ना ले लो, वो हर मामले में अपनी कंट्री को जो है ना आगे देखना चाहती है। तो उसी हिसाब से जो है ना हुकूमतें जो है ना जो हैं वो किरदार अदा करती हैं। तो वैसे मुबारक हो आपको, आपके नए जो है ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब दोबारा सेलेक्ट हो गए हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं रिएक्शन कर रहा हूं, तो इसी वजह से मैं आपको आज मुबारक दे रहा हूं, ठीक है। एक बार फिर दोबारा वो जो है ना आप तमाम दोस्तों के साथ चलेंगे। तो देखते हैं पिछली बार उन्होंने क्या किया, उसको छोड़ दें। पिछली बार भी अच्छा कुछ किया है तो आपने उनको दोबारा सेलेक्ट किया, दोबारा मौका दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए हकीकत में कि लोगों का, पब्लिक का दोबारा से प्यार मिल पाना ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब हुकूमत एक आती है ना तो नेक्स्ट टाइम उसको मौका मिलना ये नामुमकिन होता है। लेकिन मौका सिर्फ उसको मिलता है जो बंदा अपनी कंट्री के लिए काम करता है। तो आपने नरेंद्र मोदी साहब को दोबारा मौका दिया, जाहिर बात है उन्होंने कोई अच्छे काम किए हैं, तो जो है ना आपने जो है ना उनको दोबारा मौका दिया। तो यकीन करते हैं आपको हमारी ये रिएक्शन वीडियो भी पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी रिएक्शन वीडियो पसंद आई है तो काइंडली आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके हमारे जो है ना इस घंटी के ऑप्शन को भी लाजमी दबा दीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, रिएक्शन वीडियो, तो हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। अभी तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।